Jai Hind, dear students of class 10th, welcome in geography class. Today I am going to start lesson 6 manufacturing industries. The word manufacturing industries means simply you can understand the processing raw materials into finished goods. Industry is a comprehensive term which explains three aspects. Number one, extraction of minerals like mining. Mining is also called as mining industry. Second, processing raw materials into finished goods, that is called manufacturing. And provision of services like tourism industry, hotel industry. So there are three types of activities: primary, secondary and tertiary. We are basically going to discuss in this chapter secondary, that is known as manufacturing industries. At the beginning of the lesson, one story of a small kid named Haris is given. Haris went to a market with his parents. They purchased shoes and clothes for him. His mother purchased utensils, sugar, tea, diyas. Haris observed that the shops in the market were flooded with items for sale. He wondered how so many items could be made in such a large quantities. His father explained that shoes, clothes, sugar, etc. are manufactured by machines in large industries. Some utensils are manufactured in small industries, while some items like diyas, the earthen lamps, are made by individual artisans in their household industry. So this story is telling about that if the lot of manufactured goods are there in the market, they are produced by someone, and basically it is a production of manufacturing sector. So we are going to discuss about the manufacturing industry in this lesson. What is manufacturing? Production of goods in large quantities. Or listen carefully. Production of goods in large quantities after processing from raw materials to more valuable product is called manufacturing. रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में बदलना क्या है? मैन्युफैक्चरिंग है। और इससे क्या होता है? प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ जाता है। एट ईच एंड एवरी लेवल ऑफ प्रोडक्शन वैल्यू इज एडेड टू द प्रोडक्ट। सपोज देयर इज अ raw cotton is of 100 rupees. If you are making yarn of it, the yarn will be of 200 rupees. If yarn is converted into woven fabric, that is textile, kapda bana de, then it will be of 400. And with the cloth, if you are making ready-made shirt, the ready-made shirt will be of 1000 or more than that. तो 100 रुपए की रुई 200 रुपए का यार्न हो गया, 200 रुपए का यार्न 400 रुपए का कपड़ा हो गया, और 400 रुपए के कपड़े से अगर रेडीमेड गारमेंट बनाते हैं तो क्या हो गया? उसकी कीमत बहुत बढ़ गई, 1200, 1000, जितने में कंपनी उसको स्टिक करे, फिर उस मार्केट में आ जाता है. सो इट इज सेड दैट वैल्यू इज एडेड at each and every level of production. We know that paper is manufactured from wood, sugar from sugarcane, iron and steel from iron ore, aluminium from bauxite. We also know that some types of cloths are manufactured from yarn. कपड़े बनते हैं धागे से. Yarn itself is an industrial product. और large quantities में yarn कहाँ बनाया जाता है? मशीनों द्वारा मिल में. इसको टेक्सटाइल मिल कहते हैं. People employed in secondary activities. People employed in secondary activities. Secondary activities means manufacturing. Manufacture the primary materials into finished goods. जो लोग इस सेक्टर में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, वो क्या काम करते हैं? प्राइमरी मटेरियल्स यानी प्राइमरी एक्टिविटीज के जो प्रोडक्ट है, जैसे एग्रो प्रोडक्ट, जैसे गेहूं से आटा बना देना, धान से चावल बनाना, प्रोसेसिंग ऑफ agro product from primary activities. So here it is called as manufacturing. The workers employed in steel factories, car, breweries, textile industries, bakeries, etc. all fall in this category. This category is secondary activity. It means the manufacturing. Some people are employed in providing services. Yes, many people are there in service sector, the tertiary activity. It is right.
This sector has a better scope to give job to the people. But we are not discussing about that. We are discussing in this chapter mainly. You can say that we are mainly concerned with manufacturing industries. The economic strength of a country is measured by the development of manufacturing industries. You know that the countries of West Europe, entire North America are basically developed nations. They are developed because their manufacturing sector has flourished well in past. Now, our country, India, is also trying to compete with those countries of the world for better and better production of goods through manufacturing. We are increasing the number of industries, and we are also looking after the quality of products, because now it is the age of globalization, and we have the products of India has not to face competition from the product of Pakistan or China. Also we have to face from we are facing all these competition from West European countries, America, etc. So in this context, manufacturing industry becomes very important for any country. So what are the importance of manufacturing? Number one, manufacturing industries not only help in modernizing agriculture, which forms the backbone of our economy. They also reduce the heavy dependence of people on agriculture income by providing them jobs. So two things happen. For modernization, we need manufacturing industry. As the manufacturing industry, they make machines and inputs for utilizing in agriculture, making it modernized. They are making machines for agriculture, inputs to agriculture that is given by manufacturing industry. They also these manufacturing industries also provide jobs to the people and reduce the heavy dependence of people on agriculture. एग्रीकल्चर में जो लोगों का बहुत ज़्यादा गहरा प्रेशर है फॉर एम्प्लॉयमेंट उसको भी कम करता है. Industrial development is a precondition for eradication of unemployment and poverty. If you have to make your country prosperous, if you want to give more and more employment to the people to make their life standard, there is a precondition. We need to develop manufacturing sector. जब प्रोडक्शन होगा तभी उसका हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा. This was the main philosophy behind public sector industry and joint sector ventures in India. भारत में जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है गवर्नमेंट सेक्टर की, उसका मोटिव ही यही है, वेलफेयर ऑफ पीपल. जबकि प्राइवेट सेक्टर का मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट. It was also aimed at bringing down regional disparities. Some regions in our countries are far advanced in economic development. Some regions are far behind in economic development. You can take the example of states like Odisha, which is not developed as Punjab. Punjab is more developed than Odisha. Because in Odisha there is a huge use of some minerals, but manufacturing industries were not developed. But in Punjab, they lack in minerals, but they have developed manufacturing industry. So because of development of manufacturing at large scale in Punjab, their economy is better than Odisha. So it is important, as we are establishing more and more manufacturing industry, we can decrease the regional imbalances. We can balance the development. Export of manufactured goods expand trade and commerce and brings much needed foreign exchange. For foreign exchange, there is a requirement of international trade. Now, what thing we will go for trade? Only the raw material? No. If you are exporting manufactured goods, it is better for, as you can see in case of some countries like Japan. Japan is importing iron ore from India, and after producing steel, again selling good quality steel to India. हम लोगों से रॉ मटेरियल लेते हैं और हम ही लोगों को स्टील बेचते हैं. प्रॉफिट किसको ज्यादा होता है? जापान को. So there is an urgent need to develop these manufacturing sector for betterment of the economy of our country.
Countries that transform their raw materials into a wide variety of finished goods of higher value are prosperous, as Japan from Asia, most of the European countries, North American countries, etc. So India's prosperity lies in increasing and diversifying its manufacturing industry as quickly as possible. Agriculture and industry are not exclusive of each other. They move hand in hand. How? There are many agro-based industries called agro industries in India. They derive their raw materials from agriculture, like jute textile, cotton textile, tea industry, etc. On the other hand, the manufacturing industry provide inputs to the agriculture, input including मशीनरी, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, सभी को हम इनपुट बोलते हैं। एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए कहाँ से आएगा? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। एज वेल एज फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, the vehicles are also coming from manufacturing sector. So both the sector, manufacturing and agriculture, are not exclusive for each other. They move hand in hand. Thus, the development and competitiveness of manufacturing industry has not only assisted agriculturalists in increasing their production, but also made the production processes very efficient. In the present day world of globalization, in agriculture, the word globalization, we have discussed about the globalization. It means making a simple way to access the market of another country by all. Today, this is the word of globalization, and each country can sell its product in the world wherever they want. पूरे वर्ल्ड में कहीं के भी मार्केट को एक्सेस कर सकता है थ्रू WTO. तो ग्लोबलाइजेशन का टाइम है. So our industry needs to be more efficient. Why? If our industry will be better, if it will more competitive, making good products, then we can compete in the world market. Otherwise, there is huge competition in the world market. Self-sufficiency alone is not enough. Our manufactured goods must be at par in quality with those in international markets. Only then we will be able to compete in the international market. Now we are going to discuss about the contribution of industry to national economy. Over the last 2 decades, we are talking about 90s 2 decades, the share of manufacturing sector has stagnated at 17% of GDP. बहुत कम है. पूरे जीडीपी का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है केवल 17%, बहुत कम है. आउट ऑफ टोटल ऑफ 27% फॉर इंडस्ट्री. शुरू में ही हमने बताया इंडस्ट्री का 3 एस्पेक्ट होता है: एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, और तीसरा प्रोविजन ऑफ सर्विसेज. तो जो मैन्युफैक्चरिंग है इसका 17% है आउट ऑफ 27%. इट मीन्स अदर इंडस्ट्रीज विच इंक्लूड्स 10% for mining, quarrying, electricity and gas, etc. This is much lower in comparison to some East Asian economies like South Korea, Japan, China, where it is 25 to 35%. The trend of growth rate in manufacturing over the last decade has been around 7% per annum. The desired growth rate over the next decade is 12%, and since 2003, manufacturing is once again showing a growth rate of 9 to 10% per annum. But this year, due to pandemic or corona, manufacturing has suffered a lot in India, not only in India, even in the world, but it is loss for our country. With appropriate policy interventions by the government and renewed efforts by the industry to improve productivity, economists predict that manufacturing can achieve its target over the next decade. और मैन्युफैक्चरिंग को बेटर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने किसकी एस्टेब्लिशमेंट किया? एनएमसीसी की. एनएमसीसी मीन्स द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल हैज बीन सेट अप विद दिस ऑब्जेक्टिव. नाउ द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द इंडस्ट्रियल लोकेशन. ऐसा नहीं कहीं भी ले जाके इंडस्ट्री लगा दो
और प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। सपोज करो एक इंडस्ट्री वाला है, उसको इंडस्ट्री लगानी है, शुगर प्रोडक्शन करना है। वो अगर राजस्थान में जाता है थार डेजर्ट में, जहाँ मार्बल अवेलेबल है, नेचुरल गैस अवेलेबल है, और उसको बनाना है शुगर केन, तो क्या वहां के लिए सुटेबल होगा? नो। बट if he is visiting toward those areas where sugar cane production is done, sugar industry can be located, can be established. Suppose like उत्तर प्रदेश, अगर यूपी में आते हैं, वेस्ट यूपी में, ईस्ट यूपी में, जहां भी शुगर केन का प्रोडक्शन है, इंडस्ट्री लगा सकते हैं। So industrial location are complex in nature. These are influenced by availability of raw material. सबसे पहले इंडस्ट्री को क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल अवेलेबल होना होगा नियर बाई, अदरवाइज द कॉस्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन विल बी हायर, फिर महंगा प्रोडक्शन होगा और प्रॉफिट का चांस कम हो जाएगा। लेबर द skilled labor can be hired from other places, but unskilled labor should be available in that region. Capital can be transferred nowadays, power, market, etc. It is rarely possible to find all these factors available at one place. Consequently, manufacturing activity tends to locate at the most appropriate place where all the factors of industrial location are either available or can be arranged at lower cost. So here I am giving one example to you about Jamshedpur. Why Jamshedpur is famous for TISCO, Tata Iron and Steel Company. Jamshedji Tata in 1907 thought about one iron and steel company. He thought that there should be a place which is be located at a point from where we can take the raw material easily. We can transport our product through railroad or by sea. We can get ready market for it, everything. So जमशेदजी टाटा ने सेलेक्ट किया एक छोटे से गांव, उसका नाम था साकची। जमशेदपुर जिसका आज नाम है साकची, छोटा सा। It was located at the confluence of two rivers, सुवर्णरेखा एंड खरकई। वहां पे आयरन और अवेलेबल था, पावर के लिए कोल अवेलेबल था, लाइमस्टोन अवेलेबल था। तो सारा रॉ मटेरियल जो भी रिक्वायर्ड होता है आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए, सारे अवेलेबल थे वहां पे। इसके अलावा कैपिटल मुंबई से उन्होंने ट्रांसफर किया, लोकल लेबरर्स बहुत सारे मिल गए एक्टिविटी के लिए। तो साकची जो कि किसी समय गांव हुआ करता था, आज एक बड़ा सा टाउन है जिसको हम लोग जमशेदपुर जानते हैं, क्योंकि वहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल था। और साकची लोकेटेड था कोलकाता दिल्ली जो मेन रेल रूट है उस पे, कालामाटी रेलवे स्टेशन वही था। इसके अलावा सी पोर्ट, कोलकाता का सी पोर्ट इसके काफी करीब था। इस तरह से सारे फैक्टर्स अवेलेबल थे, इसलिए जमशेदजी टाटा ने अपना पहला और इंडिया का आज भी सबसे बड़ा और पुराना इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट टिस्को को वहां लगाया। Do you know, after an industrial activity starts, urbanization follows. जैसे हमने बताया साकची एक छोटा सा गांव था, लेकिन आज एक जमशेदपुर बड़ा शहर है। तो कहा ही जाता है आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स अर्बनाइजेशन फॉलोज। समटाइम्स इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और नियर द सिटीज। कभी कभी ऐसा होता है कि इंडस्ट्रीज को किसी शहर के पास या बहुत शहर के करीब लगाया जाए। So thus it is said industrialization and urbanization go hand in hand. Cities provide market and also provide services such as banking, insurance, transport, labor, consultants, financial advice, etc. to industry. Many industries tend to come together to make use of the advantages offered by the urban centers known as agglomeration economies. देखो अगर कहीं पे कि बड़ा इंडस्ट्री का सेटअप होता है, जैसे हमने एग्जांपल दिया जमशेदपुर का। आज जमशेदपुर है, कभी छोटा सा गांव हुआ करता था, नाम था साकची। एक बड़े इंडस्ट्री के लगने की वजह से टाटा की ही दूसरी बड़ी इंडस्ट्री टेल्को वहां पे लगी, जो कि ऑटोमोबाइल्स बनाती है, और उनको टायर ट्यूब की सप्लाई के लिए, रबर कुशन के लिए बहुत सारी अदर इंडस्ट्री वहां पे
स्टेब्लिश हुई और धीरे धीरे वो छोटा सा गांव एक बड़ा सा शहर बन गया। उसी तरह बहुत से बड़े शहर है जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, जैसे कौन कौन सी फैसिलिटी, इंश्योरेंस की, ट्रांसपोर्ट की, लेबर की, कंसल्टेंट की, फाइनेंशियल एडवाइस की। सो मेनी इंडस्ट्रीज to tend to come together to make the use of advantages। तो बहुत सारी इंडस्ट्री उस शहर के एडवांटेजेस को यूज करने के लिए अर्बन सेंटर्स के करीब लाके अपनी यूनिट लगाती है। इसको हम लोग बोलते हैं एग्लोमेरेशन इकोनॉमी। ग्रेजुअली a large industrial agglomeration takes place। In the pre-independence period, most manufacturing industries were located in places from point of view of overseas trade। जो प्री इंडिपेंडेंस फेज हम लोगों का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का है, वो मोस्टली उन शहरों में इंडस्ट्रीज लगाई गई जहां से ओवरसीज ट्रेड यानी समुद्री रास्तों से ट्रेड हो पाए, जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एटसेट्रा। कॉन्सिक्वेंटली देयर इमर्ज सर्टेन पॉकेट्स ऑफ इंडस्ट्रियली डेवलप्ड अर्बन सेंटर्स सराउंडेड बाय अ ह्यूज एग्रीकल्चरल रूरल हिंटरलैंड। और कुछ एक बड़े शहर वहां भी इंडस्ट्री लगना शुरू हो गया, क्योंकि रेलवे का डेवलपमेंट हुआ, ट्रांसपोर्टेशन तेज हुआ और उस बड़े से शहर का प्रभाव बहुत दूर तक गांवों के ऊपर था, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंटरलैंड। हिंटरलैंड माने द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एनी सिटी और अ पोर्ट दैट इज नोन एज हिंटरलैंड ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज। इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज में बेसिकली हम लोग देखते हैं इंडस्ट्री में क्या करते हैं, हम इनपुट्स डालते हैं। इनपुट्स में रॉ मटेरियल्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज होता है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी को ट्रांसपोर्ट करके एक साथ लाके हम लोग फैक्ट्री सिस्टम में डालते हैं। जहाँ फैक्ट्री बनती है वहीं प्रोडक्शन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट। और आउटपुट दैट आर द प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द मार्केट and in market they are sold, again we are getting money and money is coming back to use again the inputs in industry to produce something new. So there is linkage between industry and market. Thank you for the day.